औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस, ये नेशनल बुक फाउंडेशन से है। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम। हमने कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना है। हम इसी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चैप्टर काफ़ी लेंथी चैप्टर है हमारे पास। चैप्टर 1 जो है काफ़ी लेंथी चैप्टर है। हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं या हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आगे। सबसे पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। SRQS गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग शॉर्ट रिस्पॉन्स। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेपियर बोन इन अर्ली कंप्यूटर। मैंने ना नोट्स तैयार किए हुए हैं तो मैं आपको करवाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, Napier bone were a calculating tool invented by John Napier in the early 17th century. They were used to perform multiplication, division, and extraction of square roots through the manipulation of rods inscribed with number. This invention was significant because it simplified and speed up complex calculations, laying the groundwork for future mechanical calculators. सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डिड चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन डिफर फॉर द एनालिटिकल इंजन। The difference engine was designed by the Charles Babbage to automatically compute and print mathematical tables using the method of finite difference. It was a mechanical calculator in construct the analytical engine. पहले difference engine था, अब analytical engine है। The analytical engine was more advanced and conceptualized as a general purpose computing machine. It includes features like a control unit, memory, and the ability to use any calculations, making it a precursor to modern computer. हमारे पास दो चीज़ों में डिफरेंस है, एक डिफरेंस इंजन में और एनालिटिकल इंजन के दरमियान हमने क्या किया, डिफरेंस प्रिपेयर किया, डिफर किया नहीं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। The primary goal of fifth generation computer is to advance computer technology through artificial intelligence. This computer aimed to be more intuitive and capable of understanding natural language, recognizing patterns, learning from experience, and making decisions, thus mimicking human thoughts process. फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी mentioned on the motherboard in the Neumann architecture. In the von Neumann architecture. In the von Neumann architecture, the 3 types of memory commonly mentioned are RAM, ROM, and cache memory. RAM क्या है? Random access memory. ROM है read only memory और है cache memory. RAM used for temporary storage of data and instruction that the CPU needs while performing tasks. ROM stores critical startup instructions and firmware that remain unchanged. और आगे cache memory, a smaller, faster type of volatile memory that store copies of frequently accessed data for quick retrieval by the CPU. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। Volatile memory RAM loses its data when the power is turned off. It is used for temporary storage while the computer is running. Non-volatile memory ROM flash memory retain its data even when the power is off, making it suitable for long-term storage of essential program and data. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो मेमोरी हिरार्की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमने इस क्वेश्चन में हायरार्की करनी है। हायरार्की होता है स्टेप बाय स्टेप हमने इसके डायग्राम को वो करना है जज। पहला हमारे पास है रजिस्टर्ड,
दूसरा है कैच, तीसरा है मेन मेमोरी रैम, उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड ड्राइव्स एसएसडी कार्ड्स। रजिस्टर्ड में इन्होंने लिखा है फास्टेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव और स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। और आखिर में जो सेकेंडरी स्टोरेज है वहाँ पे है लोएस्ट, लीस्ट एक्सपेंसिव और लार्जेस्ट कैपेसिटी। हमारे पास ये हायरार्की है, सबसे पहले रजिस्टर्ड भी आ जाता है, फिर कैच और फिर मेमोरी और फिर सेकेंडरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई इज़ द वर्ड साइज ऑफ अ प्रोसेसर इम्पोर्टेंट एंड हाउ डज इट अफेक्ट कंप्यूटर परफॉर्मेंस। The word size of a processor, for example 32-bit or 64-bit, determine the amount of data it can process at once and the size of memory address it can handle. A larger word size allow for faster data processing, handling larger amount of memory and improve overall performance. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास वाई इज़ पाइपलाइनिंग एंड हाउ डज इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ अ सीपीयू। Pipelining is a technique in which multiple instruction phases are overlapped within a CPU by dividing the execution process into stages: fetch, decode, execute, etc., and processing multiple instructions simultaneously. Pipelining improves the efficiency and throughput of the CPU, leading to faster execution of instructions. क्वेश्चन नंबर 9 है इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ कस्टम कंप्यूटर फॉर अ फ्रेंड गिव 3 considerations you would take into account when choosing the type and size of memory for this computer. When choosing the type and size of memory, usage needs, budget or compatibility. Usage needs की जो जरूरत होती है. Consider the primary use, gaming, graphic designing, general use to determine the required memory size. Budget, balance performance need with the budget to choose an optimal memory type, DDR4 and DDR5. Compatibility, ensure the memory is compatible with the motherboard and CPU, including the correct speed and capacity support. क्वेश्चन नंबर 10 है यू आर अ कंप्यूटर टेक्नीशियन टास्क with upgrading an elder computer with a slow CPU. How might you improve its performance without replacing the entire CPU? To improve performance without replacing the CPU, बगैर CPU को replace किए हम इसकी performance को कैसे ठीक कर सकते हैं? Upgrade RAM, increasing the amount of RAM can reduce the bottlenecks and improve multitasking. Install on SSD, replacing the hard drive with a solid state drive can significantly speed up boot times and application loading. Optimize software, remove unnecessary programs, updating the operating system and ensure all drivers are up to date. Question number 11 है your school is planning to purchase new printer for the computer lab. Give 3 advantages and disadvantages of impact and non-impact printer to help them make a decision. In impact printers, advantages और disadvantages हमने देखने हैं. Advantage है can print on multi-part form, carbon copies typically more durable, often cheaper to maintain. Disadvantage क्या है? Noisier, slower, lower print quality compared to non-impact printer. दूसरा हमारे पास non-impact printer, उसके भी advantage और disadvantage देखने हैं. तो advantage है हमारे पास quicker, faster, higher print quality, suitable for graphics and photos. Disadvantage है generally more expensive to share and maintain, to purchase and maintain, can't print on multi-part forms. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन प्रोटोकॉल इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन. A protocol is a data communication is a set of rules and standards that define how data is transmitting and received over a network. Protocol ensure that device can communicate effectively, handling data formatting, error checking and signal timing. क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद 1 एग्जांपल ईच. सिंप्लेक्स पे आ जाते हैं, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स. सबसे पहले है सिंप्लेक्स है हमारे पास कम्युनिकेट इन वन डायरेक्शन ओनली, फॉर एग्जांपल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग. हाफ ड्यूप्लेक्स है कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शंस, ज़्यादा डायरेक्शंस में यूज होता है बट नॉट सिमल्टेनियसली. एग्जांपल है वॉकी टॉकी. फुल ड्यूप्लेक्स है
communication in both directions simultaneously. For example, telephone, calls, etc. Question number 14 है what are the start and stop bits and where they used in data transmission? Start and stop are used in asynchronous serial communication to signal the beginning and end of the data packet. The start bit indicates the start of data transmission, while the stop bit signifies the end, allowing this receiver to recognize and properly interrupt the incoming data. Question number 15 है how does a switch differ from a hub in a network? A switch intelligently routes data to specific device as on a network by using MAC address, reducing collision and improving efficiency. A hub simply broadcast data to all devices on the network, leading to more collision and less efficient data transmission. Question number 16 है how does synchronous transmission differ from the synchronous transmission? एंड यहाँ पे asynchronous है और वहाँ पे synchronous transmission. And in what situations are they typically used? और ये कब यूज होते हैं? Asynchronous transmission send data one byte at a time with start and stop bit, suitable for low speed communication like keyboards and serial ports. Synchronous transmission send data in continuous stream with synchronized clocks used in high speed communication like network data transfer. क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17 एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अ पीर टू पीर नेटवर्क एंड इट्स लिमिटेशन कंपेयर टू अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. A peer-to-peer P2P network allows all devices to act as both client and server, sharing resources directly. Its limitations include less security, scalability issues, and less efficient resource management compared to the client-server network, where dedicated server provider resources and management, offering better security, scalability, and centralized control. क्वेश्चन नंबर 18 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्टार एंड रिंग नेटवर्क टोपोलॉजीज. Star topology. All devices are connected to a central hub. Advantage include easy troubleshooting and isolation of faults. Disadvantage include dependency on the central hub, which it fails can bring down the entire network. Ring topology ring each device is connected to two others, forming a circular data path. Advantage include equal access to resources and simple data packet routing. Disadvantages include difficulty in troubleshooting, and if one device fails, it can affect the entire network unless a dual ring is used. Dual का मतलब होता है डबल रिंग जो 2 हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 19 है why is match topology considered the most reliable but also the most expensive to implement? Mesh topology is reliable because each device is connected to every other device, providing multiple paths for data to travel, which ensures network redundancy and robustness. However, it's expensive to implement due to higher number of connections and cables required, making it complex and costly. Question number 20 है what is the role of application layer in the OSI model? The application layer is the OSI model, provide services directly to end user and application. It includes application specific functions like email, file transfer, and network resources access, facilitating communication between software application and lower network layers. शॉर्ट क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हुए. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉन्ग आंसर्स के बारे में बताएंगे. ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर. और गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें.